name is Saima Rana. मैं यहाँ लम्स में पढ़ाती हूँ और I also take care of the training part of the National Incubation Center at Lahore. कुछ अपने बारे में पहले, फिर I'll move on to my panelists also. मैंने लम्स से MBA किया हुआ है और I'm also a certified instructional coach and trainer from Harvard Business School and the LUMS Learning Institute. जो कि सिखाता है कि क्लासरूम मेथोडोलॉजी और करिकुलम डेवलपमेंट कैसे किसी भी एज ग्रुप के लोगों की लर्निंग को इम्प्रूव कर सकता है। एट NICL में सिंस 2020 आई हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ द ट्रेनिंग। इसको हमने बहुत सारी लोगों को देख के, कोहॉर्ट्स को देख के, उनके मुताबिक इस ट्रेनिंग को हमने बहुत चेंज किया है उनके मुताबिक, एंड नाउ फाइनली वी आर एट अ प्लेस वेयर आई फील वेरी प्राउड ऑफ दिस ट्रेनिंग एंड यू विल hear more about it from अनम एंड उस्मान। ये जो NICL की फाउंड्री ट्रेनिंग है, ये जिसका हमने पिछली दफ़ा एक लाइव सेशन किया था, उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो इस तरह के 6 महीने का मिनी MBA प्रोग्राम है जिसमें छोटे छोटे क्रैश कोर्सेज ऑफ मॉड्यूल्स हैं जिनको लम्स की फैकल्टी बहुत अच्छी तरह डुअल लैंग्वेज में, इंग्लिश और उर्दू के अंदर इंस्ट्रक्ट करती है। एक और इसकी बहुत यूनिक चीज़ है इसका 1-to-1 डिलीवरेबल के ऊपर फीडबैक जो हर मॉड्यूल के साथ मिलता है। मुझे पर्सनली ये बहुत इफेक्टिव लगता है। और ऑल्सो कि हमारे पास एक बहुत अच्छा पूल है मेंटोर्स का, जिसमें लम्स के अलमनाई भी हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के इंडस्ट्री लीडर्स भी हैं, और ये लोग हमारे 1-to-1 हमारे कोहॉर्ट के हर बंदे को, हर इंक्यूबेटी को फीडबैक देते हैं और कोच करते हैं। आई ऑल्सो थिंक कि बहुत सारे लोग इसी किस्म की कंटेंट के ऊपर ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग्स, लेकिन हमारा एडवांटेज है द फ्यूजन ऑफ द टीचिंग एज वेल एज इंडस्ट्री कनेक्टिविटी एंड कोचिंग, एंड आई थिंक ऑल्सो लम्स लेड फैकल्टी जो कि आर वेरी रेनाउंड वर्ल्ड वाइड एज वेल एज एशिया, दे लीड दीज ट्रेनिंग। सो ये कुछ हमारे फायदे हैं। I think आज के सेशन का मकसद यह है कि we've got a very overwhelming response for our cohort 11. Many people have applied, have been shortlisted, और हम भी उनके इंटरव्यूज के प्रोसेस में हैं। But on our online Moodle जिसके ऊपर हम applications लेते हैं, we can see a lot of applications that are still in process. हमने अपनी extend किया deadline to the end of this month. Is it the 30th or the 31st? 31st of December tak. We just extended it yesterday, so people have more time after this session to fill this applications. So मकसद ये है कि कुछ सवालों के जवाब आप लोगों को हम तीनों से आज मिल जाएंगे हमारी गुफ्तगू से, और and feel free to ask us questions on our Facebook Live. These questions will be relayed to the three of us and we'll be very happy to answer this. I would let Anam and Usman introduce themselves. They are two of my personal favorites in the training. Usman थोड़े से senior हैं in one of our previous cohorts, and Anam just recently graduated. और इनका मकसद है दोनों का, एक senior और एक recently graduated को call करने का, ताकि आपको दोनों की journey का थोड़ा सा समझ आए और ये पता चले कि खाली 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद भी हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं। Anam, please introduce yourself. Sure, of course. So I'm Anam Cohort. I'm one of the co-founders for Roshni. We're an educational consultancy and we specifically work with low to middle cost private schools. उनकी हम school improvement करते हैं, हम teacher training करते हैं. So basically it's a long-term process जहाँ हम impact लाना चाह रहे हैं for those people, rather for the majority of the masses जो हमारे education sector में सफर कर रहे हैं उनके लिए. So this is like a short introduction. I'm a graduate of cohort 9. And I still sit here and I feel like that is one of the best decisions that we've made as an organization. Anam, I would also like you to tell them about your previous degree. Of course, yeah. Yes. So I'm a London School of Economics graduate in development studies. I did my first master's in 2011. Then I've been working in the development sector for about 5 years with UNDP, Shirkatga. And for the past 6 years, I'm also a lecturer at International Degree Program LGS, but for the last 2 years मैंने MPhil भी किया in Education Management Leadership from LUMS, so I'm also a fresh graduate वहाँ से, and साथ I was doing this. It was hectic, but I managed it because it was worth it, every second of it. The reason why I asked you this was कि उस्मान के introduction के बाद I would like to talk to you about कि general mix of जो हमारे पास cohort में incubatees आते हैं
उनकी backgrounds कैसी हैं, बिल्कुल। कितनी diversified हैं, and how all of them come together as a cohort. So thank you for doing that. Usman, please introduce yourself. Thank you. NICL became one of my favorite places the moment I came here. So basically, I've been in the industry for around 14 years now, with a wide experience of corporate into telecommunications, information technology, academia, real estate, social work, social impact, and now I moved across the borders into exploring the trucking industry in the USA. So corporate experience बहुत enriching है, बहुत varied है. लेकिन throughout I think from the last 6-7 years यही ज़हन में आता था कि mentoring को, coaching को, training को ease of access नहीं है पाकिस्तान में. तो और लोगों को जो एक सेल्फ एश्योरेंस है, जो एक उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, ये कहने को बहुत ट्रिवियल और बड़ी टिपिकल बातें लगती हैं, लेकिन इसका बहुत लार्ज स्केल इम्पैक्ट है. तो तब लोडिंग चैंपियंस वाज बोर्न एंड फिर हमने सोचा कि इसको एक बेहतर लेवल पे लेके जाऊं. तो तब तो टीम थी नहीं. अब अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अ टीम ऑफ 5 people who are with other commitments giving time to loading champions to develop. तो उस टाइम पर यही था कि ईज ऑफ ट्रेनिंग और ईज ऑफ कोचिंग लेकर आनी है. तो देन वी केम टू NICL. आई अप्लाइड और आई वाज वेरी ईगरली वेटिंग, और मुझे बहुत ज्यादा था कि इधर मेरा हो जाए, because I really wanted to taste an incubation center. Along with that, I wanted to do it with a very credible body. So LUMS and NICL both are very strong names to come together. So when we came here, I think जो एक passion जो शायद 10-15% पे ignite वो around 80 to 90% की है. और till date, I wouldn't say I'm quite there, but I think I'm getting there now. That's good. उस्मान जब भी बात करता है ऐसा लगता है कि उस्मान पेड कंटेंट बिल्कुल भी पेड कंटेंट नहीं है. उस्मान always speaks very highly of us and I'm very very grateful to him and he's still very connected to us. उस्मान इसके बारे में हम मजीद बात करेंगे. I want to ask Anam also कि you came with आप बहुत अच्छी डिग्रीज के साथ आ रही थी और what was this thought? Usman कह रहे mentorship चाहिए थी, coaching चाहिए थी. What was your thought? So basically what was happening was कि मैं अच्छी degrees के साथ आ रही थी, but that was the academic experience. Even though I did have professional experience, but it was still very limited to the development sector. What we learned, like as a team from NICL, was how to translate that all of that academic experience that we had into an actual, profitable business. So हम बिल्कुल raw हैं. मैं बिल्कुल हंस भी रही थी कि अगर अपने initial application में देखूं तो I don't know how you guys took us, because हम बहुत ही raw थे. हम एक हवा में एक idea लेके चल रहे थे, but आपने उसको इतना concrete करके throughout this training, it became concrete, it became measurable, and we were able to translate it in an actual startup. So that's what I could, like you mentioned, it was a mini MBA, and that's exactly, and it's a big opportunity that you can get. कि आप इतने renowned instructors से पढ़ रहे हो, and then सिर्फ पढ़ नहीं रहे, they actually make you do it. They take you through. So I feel that was majorly missing जब हम आए थे. And now that we've gone through the training and feedback, so उससे हम उसको अब अपने business को आगे लेके चल सकते हैं because of what we've learned throughout the training. So I think that is something that we really, really benefit from. Yeah. So here this is a good point to tell you हमारी कितनी diversity है हमारे cohort के अंदर. So बहुत सारे students like Anam and her group अपने thesis को भी convert कर लेते हैं into entrepreneurial ideas and then work with us. बहुत सारे लोग उस्मान की तरह हैं जिनके दिमाग में एक idea है, जिनका एक skill set है, वो उसको business बनाना चाहते हैं. That also happens. And there are many people who are close to retirement and they want to use all the wisdom and knowledge that they've collected in so many years and still have the flexibility to do their own work. So बहुत diversity है हमारे cohort में. People from the in their late 20s to people in their early 60s. And I think the way all of you come together gives me real pleasure to be able to do that. Usman, मैं आपसे ये conversation हम पहले भी कर चुके हैं. You're a father, you're a husband, you're a breadwinner of the family. And the NICL training is very rigorous in terms of we do require 5 to 9 hours a week from you. और उसके ऊपर हम थोड़ी सी we are a little conscious that people attend those sessions. People have to give in their deliverables. आपको काम भी करना पड़ता है.
So how did you manage, or I know you feel it that it's worth it. कई लोगों को worth it लगता है, लेकिन उनको लगता है उतना टाइम हफ्ते में निकालना जब आप जॉब कर रहे हो या अपना काम कर रहे हो मुश्किल लगता है. How did you find it? देखिए जब आना था ना इधर तो आई वाज ऑलरेडी वर्किंग ऑन few more projects along with my my employment. So उस टाइम ये फील हुआ था कि फाइनेंशियल हिट आएगी. So obviously having a very supportive family and a very good group of friends, उन्होंने फिर कहा कि you have to choose कि आपने फाइनेंशियल हिट लेनी है थोड़ी सी, या आपने एक्सेल करना है, या आपने उसी चीज में स्टक रहना और अपने पैशन को, अपनी उस चीज को कभी आपने आगे बढ़ने ही नहीं देना. सो फिर कुछ ऑप्शंस वे करने के बाद ऑब्वियसली इनिशियली थोड़ा सा मुझे विद इन आप कह ले जस्ट 2-3 days मुझे थोड़ा सा ये हुआ था कि am I making the right decision considering my other responsibilities and financial commitments. But at that time I chose this because मुझे ये लगा कि this is gonna be a life changing experience. मैंने कुछ रिव्यूज पढ़े ऑनलाइन आप लोगों के, मैंने आप लोगों के पेजेस देखे, मैंने प्रीवियस बिजनेसेस देखे, उनकी प्रोग्रेस थोड़ी सी देखी, तो तब मुझे लगा कि नहीं दिस इज गोना बी वर्थ इट. और जिस चीज को आप चाहते हैं उसके लिए आप टाइम निकाल भी लेते हैं. ये एज मच एज आपको मुश्किल लगे, पर जो चीज आप दिल से करना चाहते हैं उसके लिए आपका दिल से टाइम निकल ही आता है, फिर आप आते भी हैं. फिर मेरा तो यही था कि ऑनलाइन से ज्यादा हमें इधर बुला लें. No, I think you did very well there. So now let's move on from the LUMS faculty and talk about, I think हमने आपको बहुत जल्दी into so at NICL what also happens is कि हमारे बहुत सारे speaker series होती हैं, बहुत सारे investors national and international हमारे center पे आते हैं, and they want to see the diversity of our cohort. So Anam को हमने बहुत जल्दी उस exposure में during the training डाल दिया था. So Anam, let's talk about these speaker series and how did you honestly find these? I think apart from the training, this is the next best thing that can happen to a startup, because you get a chance to meet all these people who are already there and experiencing those things, and as a startup you get a chance to tell people about your work, because especially being an educational startup, it's very important to develop that connection with people, to make them understand why is it important, why are we doing this. So I think that connection that we were able to build because of those networking events was amazing for us. And at the same time, I think so many people are doing they're doing amazing work. So through these networking events, we're able to become a part of that social capital that is absolutely necessary for startups. Alag-alag aap kar lein ya as a community dekh lein, I think everything just gels in very well together if you work and we know what other person is doing, we collaborate. So I think us tarah se I feel networking events have been absolutely very beneficial for us. True. I'm very pleasantly surprised that we are getting a lot of attraction from the entrepreneurial ecosystem, as I told you, nationally and internationally. I think if we put down the number of events and the impactful visits that we've had in the last year, I don't know if many centers would have experienced that. Usman, I want to ask you, if you look at, मैंने अभी बात की हमारी faculty की instruction है, mentorship है, one-to-one feedback है, sessions है जिसकी अनम बात कर रही हैं. Which one factor stood out for you personally the most? You have to pick one. मेंटरशिप. वो इस वजह से क्योंकि मैं जब इंक्यूबेशन सेंटर आया था, मेरा बहुत मूड था कि कोई मेरे आइडिया को इतना बुरी तरीके से थ्रैश करे कि ये रिफाइन हो जाए. Right. So पहले दूसरी तीसरी क्लास में मेरी आदत थी, मैं वो जो बच्चे नहीं होते जो खुद जाके कहते हैं कि आज आपने एग्जाम नहीं लिया, वो बन गया. तो every instructor I would go to, और मैं कहता था कि ये मेरा आइडिया will it work. तो पहले दूसरे सेशन मुझे याद है हमारा कम्युनिकेशन का हो रहा था, तो उसमें जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने थ्रैश कर दिया. उन्होंने कहा था नहीं, इसको चेंज करें, इसको थोड़ा सा और कमर्शियल करें, थोड़ी सी और थॉट डाले, इट कैन डू बेटर. फिर वो आहिस्ता गया, फिर वो बेहतर हुआ. फिर एंड में डॉक्टर आमना ने भी उसको चेंज किया कि इसको स्पेसिफाई करो, इसको. वो इतनी ज्यादा सर्कल्स ऑफ रिफाइनमेंट में से गुजरा है कि आई थिंक जो मेंटोरिंग सपोर्ट है ना, और जो ओवरऑल वाइब है ना कि यू कैन डू इट वाला, कि इसको कर लो हो जाएगा. डिसअपॉइंटमेंट की इधर कोई जगह नहीं है, उस चीज की जगह नहीं है कि नहीं होगा या आप इजी हो जाएंगे. वो यू आर ऑलवेज ऑन द टोज और इन अ गुड वे.
तो वो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट। That's what worked for you. And what worked for you? So हम trash कराने आए नहीं थे, लेकिन हमारा हो गया था trash, and I think that's what we needed. It happened in the first, I think, 3 weeks design ideation phase में. It got trashed so badly that the instructor said that I'm actually concerned about you, and that made us think, yeah, we need to do something about this. Right. And we worked like crazy after that, and the presentation that followed, and he said, I'm actually quite happy with what you've got. So like Usman said, you have to be on your toes, and like also said, being in the educational sector, we know how important it is to have experiential learning, which is exactly what this does. It's not just teaching you, it's actually making you experience that and do it practically. And if you have issues, like you mentioned, you have feedback. Yeah. So they give you feedback to improve yourself, and I think it's like a whole package that they start you with the process, and then they take you to the end. So I think I found that really, really beneficial, especially the ideation So phase. these two modules that both of you have talked about, communication and the pitch practice that Usman is talking about, that Dr. Amna Khalid leads, and design thinking that Dr. Sulaiman does, are very hot favorites Yeah. of the cohort. And I think it's very pleasant for us to understand कि बहुत सारे लोग, तुम दोनों तो MBA की उस तरह की बैकग्राउंड से नहीं आ रहे थे, लेकिन जो लोग आते हैं वो भी कई दफा समझते हैं कि हमारा आइडिया शायद इतना राइप है कि इसमें चेंज की गुंजाइश नहीं है. But I'm very happy कि we do these exercises in the beginning, जहाँ पर हम उनको पहले उनका आइडिया शुरू में लिखने देते हैं, एंड के ऊपर जब हम आइडिया को दोबारा देखते हैं तो वो काफी हद तक चेंज हो गया होता है. And like Anam, they are very happy that change. Yeah. So training के end पे the take home from our foundry training, जो कि 6 महीने की ट्रेनिंग है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, ये साल में 2 दफा होती है. We usually have it, one cohort starts in January to February, as one will start in February 2023, and the second one starts in the summer. और इसके एंड के ऊपर हम एक इन्वेस्टर समिट करते हैं. उस इन्वेस्टर समिट के अंदर आपके पास पूरी ट्रेनिंग आपको उस इन्वेस्टर समिट के लिए रेडी कराती है. आपके पास आपका इन्वेस्टर्स ब्रीफ, आपका बिजनेस प्लान, एज वेल एज ऑल योर नोट्स, कि अगर आपसे कोई इन्वेस्टर कोई सवाल पूछेगा उसके जवाब आपके पास होते हैं. So let's talk about how your training kind of ends and what those practice sessions do for you. और उसको हम थोड़ा सा लेते हैं कि उस्मान, I can ask you first कि मार्केट में कैसे हेल्प किया, क्योंकि इन्वेस्टर समिट में हम थोड़ा सा स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करते हैं. These are real people who haven't heard your ideas, are listening to them for the first time, they express interest if they want to invest in you. So उस्मान, उसने उस दिन आपके लिए क्या किया और उसके बाद अब आपके लिए क्या कर रही है that investor summit? If I take it that way, तो उसमें ये है कि जब उसने ना इस तरीके से रेडी कर दिया कि वही वाली चीज है कि आपके अंदर एक सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा आउट लगे बात शायद, लेकिन आपके अंदर थोड़ी सी ह्यूमिलिटी डाल दी उसने कि मतलब यू आर नॉट नो इट ऑल. आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को टेलर मेक करना पड़ेगा. आपने इन्वेस्टर्स के लिए अपना आइडिया और तरीके से टेलर मेक किया, आप किसी क्लाइंट के पास जाएंगे तो आपको उसके लिए टेलर मेक करना पड़ेगा. अब मैं जिस तरह ये करता हूँ कि अगर मैं अपने क्लाइंट को अपना आइडिया पिच कर रहा हूँ या मैं अपना बिजनेस पिच कर रहा हूँ, अपनी सर्विसेज, तो मेरे हर क्लाइंट के लिए मेरी जो पोर्टफोलियो है वो फर्क होती है, उसकी डिजाइनिंग कई दफा डिफरेंट होती है. सो आई थिंक जो उन्होंने रेडी इस तरीके से कर दिया हमें कि फॉर डिफरेंट पीपल सेम आइडिया है, आपका वही बिजनेस है, बट आपने उनको मैच करना है, आपने उनकी एक यू हैव टू स्ट्राइक द राइट कॉर्ड. और आई थिंक वो जो एक आइडिया है ना कि नहीं वन साइज फिट्स ऑल वाला काम नहीं चलेगा, आपको इवॉल्व करना पड़ेगा, आपको कॉन्स्टेंट. तो अब अगर अब देखा जाए तो आई थिंक आई एम मच बेटर एट पिचिंग. इन्वेस्टर समिट में आई वाज अ लिटिल रॉ, आई थिंक सो. और उसमें यही है कि वो जो प्रैक्टिस सेशंस थे उनमें एक चीज जो मेरी सबसे फेवरेट थी कि उनमें हमारे ज़हन में यही डाला गया था कि कैन डू एटीट्यूड. इन्वेस्टर समिट इज एन इवेंचुअलिटी जो आनी है, तो आपका कैन डू एटीट्यूड होना चाहिए. और जिनका अनफॉर्चुनेटली नहीं था, हमने ड्रॉप आउट्स भी देखे. बहुत ब्रिलियंट आइडियाज ड्रॉप आउट हो गए, जो मुझे लगता था मेरे से भी बहुत बेहतर है वो गए. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. सो आई थिंक एंड ऑफ द डे वो जो फनल है ना वो उन्हीं लोगों से एंड पे पहुंची जिनका ये एटीट्यूड भी और जिनको ये समझ आ गई कि आपने कॉर्ड के साथ स्ट्राइक करनी है और आपने किस तरीके से हर क्लाइंट को उसके लेवल पे जाकर उससे बात करनी है. सो आई थिंक वो बहुत फायदा हुआ है मुझे. आई थिंक वो फिल्टर और वो फनल इसलिए भी वर्क करती है क्योंकि लोगों की जो
मैं बहुत रिक्वेस्ट करूंगी जो लोग अपने आइडिया के ऊपर काम करना चाहते हैं किसी भी इंक्यूबेशन सेंटर में कि इसके ऊपर फुल हार्टेड काम करें without getting distracted on anything else. Anum, would you like to take this forward? Yes, of course. I think this motivation अपने काम की जो होती है ना, I think वो नहीं होती है. मैं किसी और को उससे में बताई थी कि जो अपना काम होता है ना, तो आप लाड़ मार के literally वही वाली बात है कि दिमाग तोड़ के आप जाने को तैयार होते हो, because you own it, and उस तरह की feeling जो है वो और किसी चीज से नहीं आती है. So yes, it gets tough, burnout होता है, but I would say just don't give up on your idea. Don't believe in yourself. There are people who support you, especially here at NICL. They will help you. Reach out to people. Reach out to as many people as you can. बात करें लोगों से. Take some time off if you need to, but don't just give up on your idea. Just take it through. Slow and steady जाएं. इस कि एकदम से करके तो आप छोड़ दें. आराम से. That's what we are doing. We're doing आराम से अपने आप को देखने, experiment करें. But inshallah, hoping to go through with this. So Anam, I think let's talk about some of the facilities at the center and how they've helped you. Yeah. क्योंकि सिर्फ content और faculty और ये चीजें बहुत जरूरी हैं, लेकिन इसके साथ let's talk about what the center does for you in terms of infrastructure, in terms of facilities. Absolutely. So I think सबसे बड़ी बात तो ये कि it's in LUMS. So being in LUMS एक बहुत ज़्यादा उससे connection एक develop हो जाता है. You have access to faculty, वैसे generally also. And I think the infrastructure itself, it's very, I find it a very happy place. I feel happy when I come here. There are birds hanging around. It's colorful. It's nice. Another thing that I really like is the startups already sitting here. I feel like they're very, very helpful. आप जब मर्जी आ जाओ, वो आपको help करते हैं, experiences से करते हैं. So that's another thing. And I also feel, especially you and everyone here in the admin also, they help you. They take you, they give you those opportunities, those chances to, take your work out there. So as a facility, I felt, even after I've graduated, I'm here and I look forward to come here every day because it gets me the work on. It does. So I look forward to come to the center. Here I would like to talk about the facilities that we give to our incubatees. This is Ignite and Ministry of Information Technology and Telecom sponsored free of cost training. इस ट्रेनिंग के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं जो आई थिंक लोगों को पता होना चाहिए जो अप्लाई कर लें और जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है. एक तो हमारी वही एंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग जो कि मिनी MBA है 6 मंथ्स का. दूसरा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोटोटाइपिंग है हमारी मेकर्स लैब में. अगर आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, हमारे पास 5 किस्म की लैब्स हैं. उन लैब्स के अंदर लोग अपनी फिजिकल प्रोटोटाइपिंग करते हैं. स्टार्टअप्स, उसके कंज्यूमेबल्स, हमारी सब लैब्स टेक्नीशियंस हैं, उसमें एक्सपर्ट टेक्नीशियंस हैं. आप उनके साथ अपनी प्रोटोटाइपिंग कर सकते हो. और इसका तीसरा कंपोनेंट हमारी कोवर्किंग स्पेस है, which is a very huge co-working space like any other co-working space. और जब आप हमारी entrepreneurial foundry training जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं इसमें इंक्यूबेट होते हो तो 6 months के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट co-working space भी मिलती है. So in terms of our functions, these are 3 main things that we do. I would welcome people to come and see the Makers Lab. Also, we have a CNC lab, a PCB lab, a metal lab, 3D printing lab, as well as wood lab. And we are also working with other incubation centers to bring under, to facilitate people with other labs that we don't have. I'd also just like to add one thing there. You have anything else? Rooms, right? Yeah. So because we have the time and we have to bring in our teachers, so we bring them here. So the meeting rooms also, give us that room to have more multiple people coming in. Sure. Yes. Usman, would you like to add something to the facility? And I know you're a huge fan of the space. Honestly speaking, if I wasn't living a little far from it, I would still be sitting here. वही वाली चीज अनम वाली बात को, it's such a happy place, it's such a positive vibe place. मैंने honestly जब मैं यहाँ से गया मैंने 2 co-workings में और बैठ के काम किया और it's nothing compared to, I wouldn't take names, but it's nothing compared to the energy, the enthusiasm, the aura of NICL co-working. होता ये है कि आप इधर ना you start feeling like a boss.
आप अपने आप को ना बकायदा बिजनेस टाइकून फील कर रहे होते हो। मुझे इतना मजा आता था बिकॉज आई वुड वॉक अराउंड फीलिंग लाइक, हालांकि मैं उस टाइम डिलीवरेबल मेरा ड्यू होता था एंड आई वुड बी स्केयर्ड कि ये अच्छा होगा कि नहीं, बट आई वुड फील वॉक अराउंड हियर लाइक अ बॉस। मेरी पूरी फीलिंग, मेरी पूरी पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट आता था। इंटरेस्ट भी उसमें ना, वो जो आप सुनते हैं ना फिजिकल लॉज ऑफ मैनिफेस्टेशन, बड़े काम आते थे। मेरी यहाँ कई क्लाइंट है जो खुद ही आए और जो है मुझे बिल्कुल कोल्ड कॉलिंग नहीं करनी पड़ी, मुझे बिल्कुल किसी को अप्रोच नहीं करना पड़ा। अब करना पड़ता है जाहिर है, लेकिन ये है कि उस टाइम बस इधर ही बैठे बैठे कि लेट्स वर्क टुगेदर, ये वो सारा। तो दिस इज अ लवली प्लेस फॉर मी एंड आई थिंक इट होल्ड्स ऑसम मेमोरीज। अपना कोहॉर्ट सबको ही अच्छा लगता है, तो मुझे लगता था मेरा सबसे अच्छा है। तो आई थिंक बहुत टाइम वाज वर्थ इट इधर जो स्पेंड किया था। So we have some questions on Facebook Live that my team has passed on to me. I think we've answered the first question. If Anam can add something to it, because you came at that stage. People are saying, if I just have an idea, can I just apply? Absolutely. So let's shortly just answer that. Yeah, absolutely you can, because like I said कि आप idea लेकर आएंगे and then they will make sure कि उस idea को वो एक बिजनेस की फॉर्म में ले जाएं, बिकॉज वो एक फाइनेंशियल से लेके आइडिया से लेके वो सब कुछ ट्रेनिंग में आपको करा देंगे. सो डेफिनेटली अप्लाई इवन इफ यू जस्ट हैव एन आइडिया. Some of our other training modules are accounting and finance, जो कि अब हमने बहुत उसके अंदर अब सबके पास इंटर्न भी है जो फाइनेंशियल्स के साथ हेल्प करता है. इन्वेस्टर रेडीनेस की भी हम बात कर रहे हैं. Then we have sales and marketing. We also have sessions by real lawyers, the legal sessions. I think they really help people जहाँ को market से relevant experience मिल रहा है. I think that was also वो भी लोगों के लिए बहुत useful है. Then we do strategy and data analytics with Dr. Adnan. I think वो उसके उनके वैसे ही. और also I think बहुत important था हमारे लिए to get faculty जो खुद entrepreneurs थे. So लम्स कुछ faculty members training के अंदर हैं जो खुद अपना काम करते हैं. And I think almost 50%. I think that brings a lot of favor to the NICL training. बिल्कुल ऐसा ही है. Usman, I want to ask you. People have also asked us if you can apply as a solo founder, and I know you did. So how does that work? And do you get intimidated when people in the cohort have more than one member? Initially, मुझे थोड़ा सा हुआ था. मैं I'm going to be very honest कि यहाँ लोगों ने proper teams बनाई हुई हैं. People are more structured than me. But मेरी उस टाइम थॉट प्रोसेस ये थी कि अभी मैं इस आइडिया को इस हद तक देख लूं, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं इस आइडिया को, अगर ये आइडिया इधर चल जाता है तो मैं इसको आगे ट्रांसलेट करके टीम मेंबर्स बना सकता हूँ. तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ही मुझे आइडिया हो गया था कि अच्छा टीम मेंबर्स मैं इस तरह इस पोजीशन पे एक बंदा ऐसे कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, बिकॉज और चार्ट भी बनवाया था हमसे. तो यस, एज अ सोलो आप बिल्कुल अप्लाई करें अगर आपका आइडिया, उसके बारे में थोड़े से पैशनेट हैं, आपका दिल बन गया है कि आप फाइनली, तो सोलो एंटरप्रेन्योर के तौर पे आप जरूर अप्लाई करें. और थोड़ा सा उसमें ये चीज होगी कि आपको डिलीवरेबल्स पे यू हैव टू बी अ लिटिल बिट मोर ऑन योर टोज बिकॉज़ यू डोंट हैव दैट हेल्प टू फॉल बैक ऑन. लेकिन फिर भी घबराना नहीं. वो इस वजह से कि अगर आप यहाँ बैठ के अपना डिलीवरेबल बना रहे हैं ना, तो आपको ओवरऑल बड़ी हेल्प मिल जाती है. हम लोग आपस में एज अ कोहॉर्ट एक दूसरे को बहुत हेल्प करते थे कि मुझे आप थोड़ा सा अपना फाइनेंशियल का समझा दो मुझे. तो आई थिंक वो जो बॉन्ड आप लोगों ने हमें एक स्पेस में बिठा के बना दिया था ना हमारा, कि यू गाइस आर ऑल वन, और तुम लोग एक ही, तुम लोगों का मकसद एक है कि तुम लोगों ने अपनी चीज को सक्सेसफुल बनाना है. तो आई थिंक कंपटीशन तो था, लेकिन बड़ा हेल्दी और बड़ा अच्छा कंपटीशन बन गया था कि हर कोई दूसरे को हेल्प करने को तैयार था. और उसका इंस्ट्रक्टर्स पे और आप लोग के इधर जो जनरली आप लोग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है. बिकॉज एक हेल्दी कंपटीशन भी बनता है, लेकिन एक अच्छा कोऑर्डिनेशन भी बनता है. तो सोलो आए, कोई मसला नहीं, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं कि आप नहीं कर सकते. And likewise, Anam is 3 members coming from the, and sometimes teams reform. People come with a lot of people, लेकिन enthusiasm सब assist नहीं कर सकते. Teams reform, so please don't think about whether you won or you're a larger team. I think both ideas work. दोनों के pros and cons हैं, but don't hesitate to apply just because you're a solo member. वही वाली चीज, सॉरी मैं एक चीज ऐड कर दूं, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट. That's okay. जो है आप
यूजुअली ना जो यंग लोग जब लेके आते हैं ना अपने आइडियाज, उनको ये बात होता है कि यार दोस्तों यारों के साथ मिलकर बिजनेस करेंगे, बड़ा मजा आएगा। ये आई थिंक इट्स किलर। ये किलर इसलिए कि अगर आप उस चीज में डिमार्केशन नहीं बनाएंगे कि जी दोस्ती कहाँ खत्म हो रही है, कहाँ बिजनेस ताल्लुक स्टार्ट हो रहा है, तो फिर आपकी टीम NICL में टूट जाएगी। तो ये डिस्क्लेमर आई वांट टू गिव टू पीपल कि अगर आप दोस्ती यारी वाला काम कर रहे हैं तो डोंट थिंक कि वो आसान होगा। फिर आप प्रॉपर डिमार्केशन क्रिएट करके आएंगे जी ये ठीक है फ्रेंडशिप अपनी जगह, लेकिन मेरी कंपनी में इसका ये रोल है, उसकी इतनी डिसीजन मेकिंग होगी, दैट इज इट। एंड आई थिंक आवर लीगल एंड कम्युनिकेशन सेशंस उसका बहुत हेल्प होता है कि वो आपको क्रिटिकल और कॉन्फ्लिक्ट वाली कॉन्वर्सेशन करने के लिए थोड़ा सा इक्विप कर देता है। एंड द लीगल सेशन इज आल्सो टेलिंग एवरीवन, द स्टार्टअप, द वेंचर कैपिटलिस्ट, द अदर पीपल इन्वॉल्व्ड, स्टेक होल्डर्स, सबको कहते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करो। बिल्कुल सर। Anam, I want to ask you, जो लोग अभी इस वक्त application stage के ऊपर हैं, if you can go back when you applied and how overwhelming, क्योंकि हमारा application process थोड़ा सा extensive इसलिए है because as Usman is saying, हम बहुत seasoned ideas को लेना चाहते हैं, वो लोग जिनका तकरीबन 80 to 90% passion हो, 100% हम उसको खुद ही कर लेंगे। So हमारा एक filter process है, हमारी application है जो कि fairly easy है, लेकिन requires a bit of thought. Then we do an internal process of evaluation, और फिर हमारी foundation council है, please feel free to see that foundation council on our website. वो final interviews करते हैं, and that's how the funnel and filter that Usman was talking about हमारा cohort बनता है। उस cohort में हमारे लिए भी बहुत जरूरी है कि हमारी जो faculty cohort ratio है, उसको मैं पर्सनली बहुत कॉन्शियस हूँ that ratio has to stay within an optimal level, ताकि लोगों को बहुत अच्छी अटेंशन फैकल्टी से मिल सके, 1-to-1 फीडबैक मिल सके। So इस प्रोसेस में let's go back to your time when you applied. How difficult was it, and how would you ask people to go through at least the application? True. So it is a bit lengthy, but I feel like उस process को करते करते ही ना बहुत ज़्यादा चीजें आपको clear हो जाती हैं। ये लाइक अभी हमने बात की अगर आइडिया भी है तो जब आप उसको पेन डाउन करना शुरू करते हो, द कैटेगरीज जो एप्लीकेशन में है, बहुत ज़्यादा चीजें आपको खुद भी क्लियर होना शुरू हो जाती हैं ऐसा ऐसा करके। सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू दैट प्रोसेस, एंड इट डजंट टेक ऑनेस्टली दैट डजंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आई रिमेंबर मी एंड माय जो मेरी को-फाउंडर है, हम बैठे और आई थिंक हमने आधा घंटा पौना घंटा हम बैठे और हमने ध्यान से किया और हमने कर लिया। सो बस उसको सोच सोच के जो आपके आइडियाज हैं उनको कॉन्क्रीट करके लिखते जाएं, एंड आई डोंट इट्स नॉट दैट हार्ड ऑनेस्टली, बट यस आई वुड से दैट डू कंप्लीट द एप्लीकेशन, बीच में ना छोड़ें। आई थिंक लोग ये घबरा जाते हैं कि वो हम आई थिंक ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है व्हिच उस्मान कैन ऐड, कि हम पहले से चाह रहे हैं कि आइडिया इतना परफेक्ट हमारे पास लेकर आओ, बट हर दफा मैं लोगों को यही कहती हूँ हमने उस आइडिया को फैकल्टी ने परफेक्ट करना है, सेंटर ने परफेक्ट करना है। उस्मान, एनी एडवाइस टू द एप्लीकेंट्स? अच्छा, होता ही है वही, मैं अनम वाली बात को कंटिन्यू करूंगा कि जब आप एप्लीकेशन दे रहे होते हैं ना, तो कई उसमें सवाल, कई पॉइंट्स ऐसे हैं कि आपको तब आपकी थिंकिंग इग्नाइट हो रही होती है बार बार। अच्छा अब ये 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ भी डाल देते हैं, अच्छा ये तो मुझे यहाँ ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, अच्छा मेरी ये भी चीज चाहिए होगी, मुझे ये भी सोशल मीडियम पे चाहिए होगा, व्हाटएवर जो होगा। तो उसमें ये होता है कि एप्लीकेशन प्रोसेस में जब आप गुजर रहे होते हैं तो एक ऑलरेडी आप स्क्रूटनाइज हल्के से हो जाते हैं, आप कॉन्शियस हो जाते हैं, आपको वही पता लग जाता है कि यू रियली वांट टू डू इट और यू रियली वांट टू चेंज इट, आपने थोड़ा सा करना है या उसको क्या करना है। सो नंबर 1 वाली चीज, एप्लीकेशंस प्लीज बीच में ना छोड़ें। दूसरा ये कि and they don't have to be perfect. No, they just have to be thought through. No, they have to be thought through and presentable enough कि एटलीस्ट आपकी एप्लीकेशन स्टैंड आउट करे। तो सर से ना उतारे, आप उसको टाइम दे, आपसे 1 दिन में नहीं हो रही, आप 2 दिन में फिल कर लें, कोई बात नहीं, आप नोट्स बना लें। देखिए there is a certain way to go about things. Random things do not work, honestly. अगर आप इतनी बड़ी जगह पे एप्लीकेशन दे रहे हैं तो आपको उस पे थॉट थ्रू तो करना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। एंड आई थिंक एप्लीकेशन इन इटसेल्फ मुश्किल नहीं है, बस आप जितना रिफाइन करते हैं। मुझे याद है कि मुझे 3-4 दफा लगे थे उस चीज को रिफाइन करने में जब मैं आइडिया प्रेजेंट कर रहा था एप्लीकेशन में, और जो है क्या कहते हैं उसके बाद मैंने उसमें बड़ी दुआएं पढ़ के सबमिट किया। तो ये जो है that worked I think as well, and rest is history. Anam, I want you to talk about how
people from different cities come to your cohort. One of the Yeah. questions that we have is कि दूसरे शहरों से जो लोग आते बिल्कुल. हैं उनको हम कैसे facilitate करते हैं. You tell me what kind of people you had in your cohort, Yeah. and I'll then top it up. True, we had people from like all over the places. I think some of them came here and some of them were taken like online उस तरह से. So I think it's very accommodating like that कि अगर आप नहीं आ सकते आपको online trainings भी दे सकते हैं. I remember जब हमने start किया था तो बहुत different जगहों से लोग आ रहे थे. Right. So I don't think it's an obstacle कि अगर आप किसी और शहर में रहते हो तो आप यहाँ पे apply ना करो. So I think it shouldn't be an issue क्योंकि बिल्कुल online सही. भी हो जाती है accommodation. So we're trying to do hybrid training here. जिसमें I as a instructional trainer prefer कि आप online आओ to feel the energy जो उस्मान कह रहा है. But just in case you can't, but आपकी passion और आपका ambition is strong, we're trying to get people from other cities in online also. So in that way, our training is very hybrid. You do need a good internet connection to connect. And for some sessions, we would also like you to come in person to do that. And instructors online वालों को ये नहीं कि आप online है तो आपको कोई पूछेगा नहीं, वो आपका नाम ले लेके कहेंगे कि बताएं अपनी बात. राउंड रॉबिन हो ही जाता है. I think LUMS की एक बहुत बड़ी faculty का ये advantage है कि during COVID all of us were trained to do online teaching. उस्मान का तो काफी cohort था ही online, and what that helped us was कि हर किसी के पास technical know-how है लोगों को engage करने की even in an online setting. So I would really encourage कि दूसरे शहरों से लोग जरूर apply करें as far as you have a good idea. Usman, I want you to talk about the cohortship that exists within your cohort. I know all of you are still connected. तुम लोगों के WhatsApp group पे मैं messages पढ़ रही होती हूँ. So let's talk about how this training, after the training, what happens. NICL आपको किस किस्म की facilities देता है, and what has helped you to stay an alumni with us. I think January 2022 में I graduated. उससे ट्रेनिंग तो जाहिर है थोड़ी पहले खत्म हो गई थी, लेकिन आज तक WhatsApp ग्रुप और कोऑर्डिनेशन ओपन है. हमें अपॉर्चुनिटीज अभी तक आ रही हैं आप लोग की तरफ से. और जो ग्रुप है, मजे की बात है कि आपका कोहॉर्टशिप में सबसे मजे की बात ये होती है कि कई दफा आपके अपने ही बंदे आपके क्लाइंट्स बन जाते हैं या आप उनके कंसल्टेंट बन जाते हैं. ये सारा तो वो एक बॉन्ड रहता है और अपॉर्चुनिटी कॉन्स्टेंटली आ रही है, टॉक्स की इनविटेशंस कॉन्स्टेंटली आ रही है. मतलब एक दफा भी नहीं लगा कि अब हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं. और जब मुझे आपसे कोई हेल्प चाहिए होती है, जैसे मैं आपके साथ काफी कनेक्टेड होता हूँ, कोई फीडबैक चाहिए होता है या आपने मुझे कहीं, बाय द वे थैंक यू सो मच whenever you have endorsed me anywhere. So वो फीलिंग नहीं हुआ कि डिस्कनेक्शन है और अभी तक चल रहा है और आई एम वेरी होपफुल कि ये चलता रहेगा. और तो वो बहुत बेहतरीन काम है उस हिसाब से. I know you've also piloted some of your things. Yes. Post training. Yes. And how has this facilitated after graduating? तुम्हें कैसे facilitation ये वाली मिली है? हमें बहुत ज़्यादा मिली है, multiple stages पे मिली है. Like from here we've got one of our biggest clients from here, thanks to you. And so उनके साथ काम करना बहुत हमें beneficial हो रहा है. फिर mostly हमारे अभी तक I think Usman also mentioned we still haven't we didn't need to go to people. हम यहाँ पे रहते हुए NIC में होते हुए हमारे जितने भी clients अभी हैं वो हम खुद ही आते रहे हमारे पास, because we are here, because we're connected to NICL. तो यहाँ पे connections बन जाते हैं या कोई रेफर कर देता है. So I think that has हमें बहुत फायदा हुआ है उससे generally. And I think cohort की भी यही वाली बात है कि because everyone's working in different areas, तो वो आपको कहीं भी और help चाहिए होती है, so they're there to help you out इस तरह से. So I think it was great. True. I think let's talk about the 5% equity that LUMs take in a startup idea when we put them here. People have concerns. I know there's confusion about the word equity and revenue. We are very happy to take care of that when you join. I also wanted to ask both of you, is that 5% equity, I know it's free of cost training, but does that equity, उस्मान से मैं पहले पूछ लेती हूँ, बॉदर करती है या तुम्हें लगता है कि वो equity जौन सी है वो आपकी आइडिया को वैलिडेट करती है that LUMS has got your backing and was worth giving for what you got in return? बिल्कुल. देखें, अगर आपको इतनी बड़ी फैसिलिटी, इतनी ज्यादा ट्रेनिंग्स, इतने मेंटर्स का फ्री एक्सेस मिल रहा है तो आपकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है थोड़ी सी. और
इन चीजों में शुरू में तो आपको घबराना भी नहीं चाहिए। शुरू में अगर आप बिजनेस रिस्क ले ही रहे हैं, अगर NICL रिस्क ले रहा है आपके आइडिया पे टाइम इन्वेस्ट करने का, तो आप एक छोटा सा कमिटमेंट करने से घबराना नहीं चाहिए आपको। इट्स नॉट अ ह्यूज कमिटमेंट, और ये नहीं होता कि आपने इनिशियली कुछ भी कमाया तो 5% आपने लम्स को देने। देयर इज अ सर्टेन थ्रेशोल्ड जब आप पहुंचेंगे, और वो भी एक इतना कंपैरेटिवली हाई थ्रेशोल्ड है कि आप पे एकदम उसका कोई स्ट्रेस ही नहीं है। तो 5% आई थिंक ये तो कमिटमेंट कोई है ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट, और देयर इज नो हार्म। और उसमें ये होगा कि अगर आपकी कंपनी में 5% NICL इक्विटी है, तो आपको पता है आपके पास NICL का स्टैंप लगा हुआ है, तो ये कितनी बड़ी क्रेडिबिलिटी बूस्टर है आपकी कंपनी के लिए कि आपका NICL आपकी इक्विटी का हिस्सा है। तो ये तो आई थिंक दैट्स अ ट्रेड ऑफ वर्थ इट, ऑनेस्टली। No, I agree with him completely, because the training is absolutely free. So this is it has to be like a two-way relationship. I mean, we get some, we give some, so it's like part of that process. And I would totally back Usman on this. So one of the questions we've had from Umair Asif is saying, can we submit more than one idea? Yes, you can submit more than one idea, but probably one of your ideas would get selected, not both. Because it's very difficult to work on two ideas together in one cohort. If you have two teams working on separate ideas, वो हो सकता है, लेकिन at least टीम के अंदर से एक मेंबर को टीम हमारी ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ती है। सो दो आइडियाज उस तरह लॉजिस्टिकली डिफिकल्ट हो जाते हैं, बट प्लीज डू अप्लाई, क्योंकि आपकी देन द प्रोबेबिलिटी कि आपका आइडिया चूज हो जाएगा, दैट प्रोबेबिलिटी काइंड ऑफ रेज हो जाती है। I'm going to end this session by asking both of you of one advice in terms of work habits, in terms of commitment, in terms of an attitude that both of you want to give to the cohort. I'll start with Anam first. Anam, what would you like to say? I would, like I said, कि determination बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, and जो भी आप कर रहे हैं उसको like take it through वाला हिसाब है. But I think one thing जो बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा, हमें फ़ायदा हुआ, वो ये कि people attention span बहुत कम हो गया लोगों का. So I think one thing that we learned here, और जो सबको आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसके अपने आइडिया को या अपने जो भी आपका स्टार्टअप है, बिजनेस है, उसको डिलीवर करना है in like literally 1 to 3 minutes max, because that is the window that you have to either grab their attention or lose interest. And I think वो हम इस process में बहुत ज़्यादा हमने सीखा है to be quick, pointers, ये वो, and I think that is what you need to be doing as well. I think presentation maybe, I think one thing that we got was कि जिन्होंने हमारा interview लेते, he said you guys were very like on time and very concise. So I think keep it like clear, crisp and concise. लंबी paragraphs ना जाए उनके अंदर. So and generally I think you need to be setbacks आते हैं, but just like pick yourself up and move on from that. So that's that. That's a good one. Usman? एक स्पिरिट से आए कि आपने हारना नहीं, आप ढीठ बन जाए। ढीठ बन जाए, ठीक है, आप ढीठ दो सेंस में बने, एक तो ये कि आपने सक्सेसफुल होना है, दूसरा ये कि आपने किसी अपनी रिजेक्शन को पर्सनल नहीं लेना। अगर आपके किसी आइडिया, किसी बात पे आपको वो फीडबैक नहीं मिल सका जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आप उसको पर्सनल ना लेके यार ये तो शायद मैं ही नहीं कर सकता, मेरा ही स्किल सेट नहीं है। आप इतना सॉलिड होके, इतने कॉन्फिडेंस से अपने आइडिया के साथ आए कि यार दिस इज इट, आई हैव टू मेक इट वर्क, एंड फील गुड अबाउट इट, फील लाइक अ टाइकून, ऑलरेडी उस वाइब में आए, तो बड़ा मजा आता है। अभी मैं सोच रही थी, one of the last बिल्कुल last sessions थे हमारे just before the investor summit, and Anam's idea was tracked on the last day, and I was as concerned as she was. We came out of the hall, and I think then she did it so beautifully on the investor summit. So I totally agree with you. That should happen. Do we have other questions, or should I wrap it up? So thank you very much, Usman and Anam, for sharing your ideas so candidly. I would really encourage people who are still in the process of applying or who are planning to apply in our cohort 12 to please start thinking about your ideas. Follow us on our socials. There's a lot of content that is available by a very capable marketing team that I have, led by Usman, Samin, and Umar, who are with me together today also. Thank you very much, guys. Also, there's a WhatsApp number, there's an email address to ask questions later also. So please don't hesitate to ask questions while you're in the process of applying.
and hoping that to see all of you at the center. Usman, Anam, and myself will be very happy to engage with you. Thank you Sure. very much. Thank you so much.